Yes, Yes. please. अब मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ जो आज की कहाँ गई, एक सेकेंड. अच्छा, this okay. So 1 second. Okay. So today we are going to talk about the kind of relationship and relatedness that exists when we are seeing a patient. When the patient is sitting with us, or if it's proper psychoanalysis, lying on the couch, what are the relationships going on? And on surface, it appears that there are two people, one person, and there should be just one relationship. That is not true. Because we are into deeper and more complex nuances of psychology, we believe that when we are with a patient, there are four different kinds of relationships going on. One relationship is what we will call a real relationship, which exists between the patient's unaffected part, because the patient is not all illness, right? I mean, this you understand, that patient has psychopathology and patient has psychophysiology. And the doctor has psychophysiology and doctor has psychopathology. I mean, what is the difference between people who are mentally ill and people who are not mentally ill? As far as I'm concerned, after working in this field some 52 years, what I find are the actually only two major differences. One difference is that in the people who are mentally ill, the mentally ill part is this big and mentally healthy part is this small. So they have more mental illness and less mental health. And what about mentally healthy people? They have more mental health and less mental illness. Nobody is free of mental illness. Nobody. And nobody is completely devoid of mental health. अब कोई psychotic आदमी है, if a psychotic man is brushing his teeth or combing his hair, that has nothing to do with his psychosis, right? And आप अपने आप को healthy समझते हैं. Each night you have dreamed 4 times, which is crazy, about which you have no control, and you can see crazy things in your dreams, and crazy thoughts can occur to you, and so on and so forth. So the proportion of the mind that is occupied by mental health and mental illness differs. That's one. The second thing is that the attitude and the relationship between the healthy part and the sick part is very cordial, decent, and protective in a healthy person. A healthy person says to his sick part that, look, Abhi, we are working, just stay quiet, don't come out. And you can come out after 5 p.m., you can come out in vacation, you can come out, go write a poem or something, or talk, I'll let you come out when we are with very, very intimate and close friends, but not in this public forum. You keep quiet. And I'll make money and get you treated and such. And if you insist upon expressing yourself, let's go to Brazil, and in Rio de Janeiro, you can do what you feel like doing. So that's a cordial sibling relationship in a mentally healthy person with his own mentally ill part. In the mentally ill people, the relationship is a bad one. The mentally ill part is bigger and convinces the mentally healthy part that either the mentally healthy part is sick and the mentally ill part is healthy, or pretends that mentally ill part does not exist, or that one should be proud of that part, and it tries to destroy the mentally healthy part, and any part that of mentally healthy part that associates with other mentally healthy people, he tries to attack them also. So that is the main difference. Now, keeping that in mind, we also have to understand that when the patient comes to see us, the patient does not only bring their pathos, they also bring their ethos, their way of being, their culture, their style, their habits. Same thing with the doctor. The doctor brings their specialty skills, but they also bring their character. So as a result, all kinds of complex relationships evolve when two people
a doctor and a patient are in a psychotherapy chamber, psychotherapy room. First is the real relationship. The real relationship exists between two parts: the patient's healthy part or unaffected part and the therapist's professional self, meaning where the therapist has a practice, where the therapist has an office, whether the therapist has a job, whether the therapist is responsible to show up some building, some office, to charge money, to collect that fees, blah, blah, blah. The therapist's professional self and the patient's healthy part, these two are related with each other, and that's called real relationship. This involves showing up for appointments. This involves payment. If you're in private practice, you have to be paid. And even if you're not in private practice, somehow or the other, I mean, I don't know about Indian situation. I was, till last June, employed 5 days a week, full-time in a medical school. Now I'm going only once a week on the way to retirement. But even those 5 days a week for 42, 43 years that I was in Jefferson, and before that in University of Virginia, that during that time when I was seeing patients, the patients will give me money. I'll turn the money to the business manager of the department, and I got a salary, so fixed salary, and didn't affect my income and such. But I collected money from the patients. Now I'm out of Jefferson clinical program. I'm only there teaching 1 day a week. So the patients I see, they pay me. I bill them, they pay me. So appointments, changes of appointments, vacations, illnesses, sudden absences, and charging money, collecting money, all these things are related to the real relationship. Although, of course, they can be pulled into other parts of relationship, but they are part of real relationship. The fact that you are male or female, the fact that you are Hindu, Muslim, Sikh, or Christian, or Jewish, the fact that you have an office in this building, not in that building, these are all real things. The fact that the patient comes by motorcycle or by cycle or by car or walks to your office, all these things matter. So that is the real relationship. This relationship must be characterized by equality. By equality, I mean that both parties should be treated as responsible citizens and responsible adults, and both parties should have equal rights. Now, in the sense that if you get pregnant, you say, I'm not working for the next 3 months. If the patient gets pregnant, the patient can say, I'm not coming for the next 3 months. And you shouldn't be making fuss. What applies to you applies to the patient also. If there is a thunderstorm and big rain and the patient cannot come, the patient should not be charged. If real calamities happen, same thing applies to you. If there's a thunderstorm, a big calamity, earthquake, and you cannot get to your office, the patient should understand that. So there should be an equality. And I think last time when I was talking about the therapist's office, I had mentioned that the furniture should be such that the patient's chair, I think it's not a good idea to have the same chair. That blurs boundaries. I think it's a good idea to have slightly different chair, but it should be of equal, let's say, equal social standing or equal financial investment and equally comfortable chair. Although I think it's a good idea to have it somewhat different. Then equality in terms of illness. You become ill, you take time off, patient becomes ill, patient takes time off, and so on and so forth. You belong to one religion and you take Diwali off. Suppose the patient is Muslim and patient says, I cannot come on Eid, that's okay too. So there should be a certain kind of equality of civil rights. There should be truthfulness. Never lie to a patient. If you feel that you have to lie, tell the patient that unfortunately I cannot answer this question. That's a better thing. That's a better thing, because answering this question will create more difficulties, and this is my clinical judgment. That's fine. But don't tell lies to the patient. Never tell a lie to the patient, because that destroys everything. Patient has been lied to already by their mother and father. They need somebody truthful.
So if you find there's a question that you are somehow personally very uncomfortable with, just say, unfortunately, I cannot answer this question in reality. And I hope you'll understand. And if not, you'll tell me how you feel about my not answering, but I think it'll cause big disturbance in our work, period. And there should be fairness. So this is the real relationship. Then comes, then comes the relationship called therapeutic alliance, which is a relationship between the patient's part that is concerned about themselves. Patient, like yesterday, a patient called me who from here, who's very concerned that, and he's a young man married to a woman, that he's never feels like having sex. And he's very worried about it. And because he cares about his wife. And he's all of 34 years of age and physically completely healthy. And his desire has completely disappeared. It used to be. They've been married now 3 years. And after 1 year or so, the desire completely vanished. And he's troubled by it. And then we, of course, I interviewed him for about an hour, and then it turns out that there are other areas in which, this pattern appears again and again of enthusiasm and vanishing of the enthusiasm and such. So, but the fact that the patient called about this matter and took the courage to call, and this was, by the way, just to make you clear, this was an Indian man living in the United States, but Indian man. A young man, 34 years old, otherwise living an enviable life with money, job, prestige and everything, success and such, but absolutely no sex desire, which vanished, so to speak. So that the fact that he was concerned about it, that's a good sign. If you're having abdominal ache, you should go to a doctor. Don't just let it go on and on and on. You should be self-concerned. So the self-concerned part of the patient that wants help and wants to get better, and the therapist's working ego. Now here, I'm not talking of professional self. That has to do with money, office, appointments, schedules, blah, blah, blah. Here I'm talking about the part of the mind of the therapist that is listening in certain ways and talking in certain ways, collecting information in certain ways, and then deciding about them, and then deciding to talk, and how much to talk, when to talk, and what to say. There's an arc. First is hearing, then is listening, then is understanding, then is putting it in theoretical perspective, then trying to decide, titrating, and then saying. So there's an arc like this, from here to here. You go here and come out here. And in between, there's this arc. So that piece is called the working ego. That's not the professional self. That has nothing to do with money. That has nothing to do with what time of the appointment it is. That's nothing to do with, office being hot or cold. This is listening and speaking. And we will have sessions on them. I just sent Dr. Sahu this slides for the listening and speaking. So that is the relationship. The first one is between the patient's unaffected part and the doctor's professional self. Second one is between the patient's concerned part and the therapist's working ego. By the way, it reminds me that I'm looking at the type that I sent you. So I suddenly felt deprived because Dr. Sahu makes all these colorful things and I'm not seeing them. Is anybody seeing them? You had not said yet to say it. That's why I have not said. Put it on. So I'm always entertained by your skills. Yeah. Next one. Yeah, let's see. Yeah. Yes, wow, Yeah. Jesus. This is so cool. You are really cool. Thank you. I think I owe you at least a bottle of whiskey. Okay, so here we go. The real relationship and the second one we are talking about. Now, this second one
is characterized by mutuality, meaning the two people should have the same interest. Now, can you take this off now? Because I'd like to see the people. Thank you. Let's go back to seeing the people. Hello? Yeah. Okay. Thank you. So this was very cool. And we'll go to the next one later. This relationship is characterized by asymmetry, but mutuality. Now, this is a very interesting concept, that while we say that things should be equal, but equal does not mean symmetrical. So that asymmetry means that the patient is required to tell about their childhood, about their dream, about their sexual life, about their hostile fantasies, about what happened to them when they were a little kid, about their mother, about their father, real father, what were their fantasies about their mother and father. So we expect the patient to reveal themselves, expose themselves, and help them do so, while we remain relatively anonymous. And as I said in last session, that divide the patient's questions, patient will ask questions into three types. One is the real questions, that how much is the fee? Are we going to meet Thursdays or Tuesdays? These questions should be answered as a professional. There's no reason to obfuscate and mystify. Then there are questions that are conversational grease, like oil. Do you know, doctors, how I was passing by Neelam Theatre, you know where that is. You say yes. Uska koi usme atakne ki zarurat nahi hai. So these questions, professional questions and conversational empathy questions, should be answered. Other extreme, were you beaten by your father? Were you sexually abused as a child? Did your mother die when you were 2 years old? No. These questions should never be answered, because इनसे therapeutic gradient बदल जाता है. तो इसको बोलना चाहिए कि I'm sorry, I'm unable to answer this question because it's my conviction that this would alter and affect the kind of gradient we need to maintain here of help giving and help seeking. And it can alter it. I'm interested in your fantasies about this. Whether I was beaten, whether I was sexually abused, whether I lost a parent as a child. I'm very interested in hearing your thoughts about it. And what makes you ask this? I'm interested in all that. Feel free to talk about it. But I cannot go into the real answers to this question. In between, are you married? Do you have children? Do you have siblings? Are your parents living or dead? How many brothers and sisters you have? Yes, up to this is like garden variety stuff. You can say, look, tell me what makes you ask this. What would happen if I told you that I was married? Tell me what would happen if I told you that I was not married. Or tell me, what do you think? Do you think I have siblings? Or do you not think I have siblings? What is giving rise to these questions? What would you like to be the reality? उसके बीच में हैंडल कर सकते हैं. अगर इतना ही पीछे पड़ जाए मरीज तो बता देने में भी कोई हर्ज नहीं है. ठीक है? तो this is therapeutic alliance means that there should be mutuality of the purpose, कि दोनों आदमियों को, मरीज को और डॉक्टर को, इस बात पे यकीन होना चाहिए और इस बात का कॉम्पैक्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट कि भैया हम तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं और हम जो हैं मिल के काम कर रहे हैं कि इसमें let us look at your problems. See how beautiful the phrase is? Let us be curious about this desire of yours. Let us be curious. This desire of yours. इसका मतलब है आपने एक थोड़ा थेरेप्यूटिक डिसोसिएशन किया उसके माइंड का और एक पार्ट को माइंड को you pulled it with your working ego. That becomes a assistant to your working ego. And the remaining part remains the experiencing ego. और उसका observing ego और experiencing ego में dissociation किया. So this kind of relationship is called therapeutic alliance. अब इसको कुछ लोग करप्ट भी करते हैं. जैसे एक बात देखो, अभी one doctor, a colleague of mine, was called by a patient. साहू साहब इस बात को ध्यान से सुनिए. देखिए ये है how the therapeutic alliance is corrupted and therefore ये हमारा काम नहीं है इसमें एंटर करना.
इस चक्रव्यूह में एंटर करना, अगर इस कंडीशन पे, तो ये काम ठीक नहीं है. जैसे सर्जन नहीं करेगा ना सर्जरी. अगर if you're going to eat a banana before appendectomy, the surgeon is not going to operate. Same thing with us. So a colleague of mine was called by a patient who said, I've heard about you and I'd like to be in treatment with you and I want to be in psychoanalysis. But I have a condition. And the condition is that I have enormous amount of money and I'm a very wealthy man and I will pay you whatever you want. Just name the price and tell me you want it once a year, once in 6 months, every month, whatever you say, I'll pay. But I have a condition that you will not treat anybody else, that you will only treat me. Now, this is not therapeutic alliance. Here, the patient is inserting something perverse, something crazy, something mentally ill into the doctor's head and doctor's life, right? So that he's hiring the doctor and he further adds this true story. And obviously my colleague was very disturbed by all this, that he further adds, and this is an American colleague, an American patient, further adds that the sessions will be decided when I feel like, because you wouldn't be working the whole day and any time. When I feel like having psychotherapy, I'll call you and you be available. So ये तो उसको तवायफ बना दिया, बल्कि हिंदी में कहें कि ये साइकोथेरेप्यूटिक रंडी बना दिया उसको, मेरे दोस्त को. Exactly. So this is not respect and this is not therapeutic alliance. He's buying a slave. He's buying a psychotherapeutic slave. जिसमें के domination, arrogance, homosexuality, all kind of bullshit is packaged in it and inserted in the doctor. His mind was really messed up, this guy, my patient, my friend. He was really disturbed by it because the guy was willing to offer him $500,000, $1 million a year or whatever. This was very disturbing. So ये चीज जो है ये चक्रव्यूह ठीक नहीं है. तो इसमें थेरेप्यूटिक अलायंस नहीं है, क्योंकि म्यूचुअलिटी और पर्पस होना चाहिए ना, म्यूचुअलिटी एंड रिकॉग्निशन कि आपका प्रॉब्लम है और मैं एक एक्सपर्ट हूं, मैं आपको हेल्प करूंगा इस प्रॉब्लम. तो द रिलेशनशिप बिटवीन योर पार्ट दैट इज कंसर्न्ड अबाउट योर इलनेस एंड माय वर्किंग ईगो, इन दो का रिलेशनशिप होना चाहिए. वो ही इज टेकिंग ओवर माय वर्किंग ईगो and he's inserting his pathological part into myself, into this doctor. And therefore, this is not therapeutic alliance. जब therapeutic alliance नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा? तो इसका जवाब ये है कि पहले माइल्ड जवाब है और माइल्ड के बाद फर्म जवाब है. जैसे कि सर्जन को बोलेगा, सर्जन अगर बोलेगा कि भैया तुम ये मत खाओ केला बिफोर हैविंग एपेंडेक्टमी. अब मरीज कहता है साहब मैं तो जरूर खाऊंगा केला, तब वो सर्जन बोलेगा इन दैट केस आई कैन नॉट ऑपरेट. सेम थिंग. तो इस मरीज से बोलना चाहिए कि देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ऑफर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बहुत से मीनिंग्स भी हैं. तो आई थिंक यू एंड आई जंप इनटू एनी एक्शन. हम लोग इस मीनिंग को डिस्कस करें पहले और इसको समझने की कोशिश करें कि क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश बाय दिस. इफ यू कैन टेक दैट एटीट्यूड, आई विल बी ग्लैड टू फर्दर चैट विद यू. इफ द पेशेंट सेड no, I am going to be the only patient of yours and you have to remain on call whenever, wherever. तब तो ये मरीज कह रहा मैं केला जरूर खाऊंगा, फिर आप सर्जरी नहीं कर सकते. मेरे साथ ऐसे बात जरा सी डिफरेंट हुई. A patient called me and he said that I want to see you and but I have three conditions. One condition is I will never tell you my name. Second condition is no record of my visit should be kept, either written or typed or electronic, nothing. And third, that money is not a problem. I have money, I'll give you money. Whatever money you want, each time cash. And no record of that transaction should be kept. So if these conditions are acceptable to you, I'll like to make an appointment. So I told him, you know what? I cannot accept your conditions for the precisely same reason that I cannot reject them. So now the patient got a little confused, which is good.
which is good. It's like अगर abdomen में ट्यूमर है तो थोड़ा एडिजिव कम हो तो अच्छा है, थोड़ा मूव करके देखते हैं इसको. उसी तरह से patient got a little confused. He says, what did you say? So I said that I cannot accept your conditions. For this is phone पे बात हो रही है. Just for the same reason, I cannot say yes to them. I cannot say no. He said, so do you in the end mean no? I said, no. I said, so do you mean yes? I said, no. So he said, you're confusing me. I said, I can repeat if you want. He said, no, I've heard it, but I don't understand it. I said, let me simplify it. You are asking me to do something very important, must be to you, very important. I have no idea what this means. I have no idea what I'm walking into. I'm a psychoanalyst. I cannot enter into compacts and agreements and contracts that I have no idea what they mean and what they're about. So if you can retain some ambiguity, some tolerance of self-questioning, maybe we should meet and then try to sort it out. If not, you'll go elsewhere. He said, okay, give me time. So I saw him. The guy comes in. He doesn't sit down. I point my hand like this. I go like this, pointing to the chair. He doesn't sit. He doesn't sit. He starts to walk in my office. I'm sitting in my chair comfortably. He walks. He goes there. He picks up a book. And he's reading, he's standing there, quiet. I'm quiet. So he says, this is a very interesting thing you're reading. Let me tell you something about this. I said, no. I'm not interested in your thoughts about this book. I'm interested in what's going on. So he says, well, let me tell you something about my mother. My mother, I said, no, I'm not interested in your mother. I'm interested in what are you doing? राइट अब कोई आदमी आपके सामने जो है आके कुर्सी पर खड़ा हो जाए तो उसकी हिस्ट्री थोड़ी लेंगे आप. पहले तो बोलेंगे भैया क्यों कुर्सी पर खड़े क्यों हो. पहले तो जो आपके सामने प्रॉब्लम है वो हैंडल करना होगा ना. अगर कोई ड्वार्फ आए आपके पास निमोनिया के साथ तो ड्वार्फिज्म को भूल जाइए, निमोनिया का इलाज कीजिए. सो सेम थिंग. This went on. This shit went on. He wouldn't tell me his name. He wouldn't tell me his address. He wouldn't tell me his phone number. He wouldn't tell me anything. And we kept going back and forth. Back and forth के बाद हो गए 45 मिनट बहस करते में. उसके बाद वो अपने पॉकेट में गया, बटुआ निकाला, बटुआ में से इतने पैसे निकाले डॉलर्स. तो कहता है, so how much should I pay you? तो मैंने कहा for what? कहता I spend 45 minutes in your office and it's your time and you're a doctor, I should pay you. I said, yes, I charge money for seeing patients. But obviously, you have not permitted yourself to be a patient and you have not let me be a doctor. So for me to take this money would be very odd. That will be like charging money for a bizarre social encounter. And I don't charge money for that kind of thing. I charge money for clinical work and you have not permitted me to do clinical work. So he says, you mean you won't take the money? I said, no, of course not. He was quite shocked. He stood there, then shrugged his shoulders and left. This was about 32 years ago. I think he might have still come back. Who knows? Who knows? Who knows? He might come back. But to have taken that money would have been to destroy the therapeutic alliance, because then his purpose and my purpose was cross purposes, different purposes. Rather than therapeutic alliance means that you and I together should look at your difficulties and you should be interested in looking at your difficulties. He was not interested in looking at his difficulties. He was acting on his difficulties. Both these examples. So therapeutic alliance means that we have to have a mutual we. याद है जब मोहब्बत आपको शुरू हुई थी किसी से तो पहले कहते थे I will come and you will meet me. हल्के हल्के एक जुमला आ जाता है मुंह में, you know what, we will do this. We will go and have ice cream. We. यही चीज साइकोथेरेपी में होना चाहिए. That is therapeutic alliance. Let us think about this problem. Let us
थिंक अबाउट दिस डिफिकल्टी ऑफ योर्स। उसमें क्या है, आप और मैं दोनों मिल के काम कर रहे हैं। सो दैट इज थेरेप्यूटिक अलायंस व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअलिटी बट एसिमेट्री। तीसरी रिलेशनशिप जो है वो है ट्रांसफरेंस। अब ट्रांसफरेंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट्स अनरिजॉल्व्ड पार्ट्स। Oh yeah, we can see that. Thank you, thank you, thank you, thank you. वो कहाँ गया? Is it there? Yeah, it's coming. It's coming. It's coming. I think. Okay. Yeah. वो भी मेरी ही तरह, वो भी मेरी ही तरह। इसमें कितना अच्छा शेर है निदा फाजली का कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। अच्छा, अब आई ट्रांसफरेंस की बात। तो ट्रांसफरेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अनरिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द पेशेंट, the part of the patient that's hurting him, the part of the patient that's causing difficulties and is giving him sleeplessness and bad dreams and symptoms and character problems and interpersonal strife. वो जो part है, उस part का इधर थेरेपिस्ट के टोटल पर्सनालिटी से या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्या रिलेशनशिप है, वो है ट्रांसफरेंस। अभी एग्जांपल बताता हूं आपको। तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इसमें दो डेफिनेशंस हैं, एक ओरिजिनल डेफिनेशन है जो फ्रॉइड साहब ने शुरू की थी, एक बाद में ऐड की गई है। वो ये कि अनकॉन्शियस रिक्रिएशन ऑफ द पेशेंट्स अर्ली सिनेरियोस। अर्ली सिनेरियो से मतलब है कि मेरी अपनी माँ से कैसा रिश्ता था, बाप से कैसा रिश्ता था, सचमुच में क्या रिश्ता था माँ से, सचमुच में बाप से क्या रिश्ता था, क्या चाहता था मैं माँ से, क्या चाहता था मैं बाप से, क्या मुझे ख्याल था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरा बाप मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो और मुझे ये था कि मेरे बाप का मेरे भाई से जो रिश्ता है उस रिश्ते से मेरा क्या रिश्ता है, और मेरे भाई का मेरी माँ का मेरे भाई से जो रिश्ता है एंड उससे मेरा क्या रिश्ता है, और ब्ला 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 ब्ला, नाना नानी दादा दादी, ये बचपन के भाई बहन पिताजी माताजी, ये बचपन के जो रिलेशंस हैं, रियल रिलेशनशिप, इमेजिनरी रिलेशनशिप, विश्ड फॉर रिलेशनशिप, एग्जैजरेटेड, फैंटेसाइज्ड, कंसील्ड, हिडन रिलेशनशिप्स एंड सच, ये सब रिलेशनशिप हल्के हल्के खुलते हैं और हल्के हल्के थेरेपिस्ट की जात पे और थेरेपिस्ट के पर्सनालिटी पे और कुछ एस्पेक्ट्स पे वो कलर करते हैं। सो दैट इज ट्रांसफरेंस। लेकिन एक नई डेफिनेशन भी ऐड की गई है इसमें, वो ये कि ट्रांसफरेंस इज आल्सो ए सर्च फॉर डेवलपमेंट फैसिलिटेटिंग पर्सन्स और एक्सपीरियंसेस। अच्छा, अब इस स्लाइड को अगर बंद कर दें साहू साहब, तो आई कैन देन अगेन टॉक टू द पीपल। थैंक यू। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ट्रांसफरेंस में एक तो ये चीज हो गई कि देयर इज ए रेपिटेशन, there is a recreation of something from childhood that is getting involved in the adult person. जैसे मैं जब रेजिडेंट था तो मैंने डॉक्टर विग साहब को इतना दुखी क्यों किया, मुझे अफसोस होता है क्यों दुखी किया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि वो मेरे बाप से भी अच्छे आदमी निकले हैं, तो मैं उनको बार बार बदतमीजियां करता था मैं उनसे, और अपने आप को बड़ा अक्लमंद भी समझता था उस बदतमीजी में। ये भी कमाल है, यही सब होता है पागल लोगों के साथ। सो आई वुड लाइक, उन्होंने कोई बात कही तो मैं चैलेंज करूंगा सबके सामने। अब ये अच्छी बात थोड़ी है यार, आपके बुजुर्ग हैं, आपके टीचर हैं, कुछ इज्जत करो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कुछ इज्जत करो यार, क्या कर रहे हो? आपको नौकरी दे दी है, आपको इंटरव्यू करके आपको रख लिया है, इसके लिए शुक्रिया करो। अच्छे अस्पताल में पढ़ने आ गए, घटिया से मेडिकल कॉलेज से, इज्जत करो। नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, आप एक्टिंग कॉकी। तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है दो चीज। उसके पीछे एक तमन्ना ये है कि एक बाप हाथ मारे, एक slap me and make me all right and make me behave। एक दूसरा ये कि यार ये आदमी मुझे इतना टॉलरेट करे कि मुझे यकीन हो जाए कि ये मुझसे मोहब्बत करता। तो इस तरह के ये प्रॉब्लम मेरा और डॉक्टर विग साहब का तो नहीं था, ये तो
इनएक्टमेंट हो गया ना, ये तो उसमें डाल दिया मैंने प्रॉब्लम तो मेरा अपने माँ बाप के साथ था, लेकिन मैं उनको बिहेव करने लगा, आई वॉन्टेड हिम टू बी एन अनएंडिंग बाउंटीफुल मदर, जिसके ब्रेस्ट में मिल्क कभी खत्म ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी माँ मैं उन्हें बना रहा था अपनी डिमांड से, हर डिमांड। और मैंने कुछ क्लेवर भी तो था, बेवकूफ तो नहीं था, तो क्लेवर भी था, तो कुछ बहुत ही कनिंग और बदतमीज डिमांड भी करी, लेकिन थी बहुत कनिंग, और सम ऑफ देम रियली पिस्ड हिम ऑफ, एंड राइटली सो। एक बार क्या हुआ 1972 में, ये डॉक्टर बासु इज योर चेयरमैन, ही विल बी मोस्ट अम्यूज्ड बाय इट। 1972 में 25th एनिवर्सरी हुई of Indian Psychiatric Society. So there was a big international conference. ये PGI में जो राउंड बीच में कैफेटेरिया है, उसके टेरेस पे और सब पे, और इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से कितने डॉक्टर्स, आइजक मार्क्स से आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया। तो काम से कुछ दिन पहले हम लोग सब रेजिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ बजट में कमी हो गई है, तो रेजिडेंट्स को जो कॉकटेल पार्टी है उसमें नहीं आना होगा, और दारू नहीं मिलेगी और खाना नहीं मिलेगा। आई रियली गॉट वेरी अपसेट। तो मैंने कहा साहब ये तो नहीं हो सकता, इतना तो काम किया तो कुछ तो दारू वारू तो मिलनी चाहिए साहब, ऐसा कैसे होगा? उन्होंने कहा कि अच्छा, तो हम लोग सब बैठे हुए थे डिपार्टमेंट के, उस समय 10-12 आदमी थे, सब को मिला के उनका वोट ले लो। तो वोट में 2 आदमियों ने कहा, एक मैंने और एक वो थे, अभी हैं शायद, वो द्वारका प्रसाद साहब, तो अच्छा वो भी, हाँ बड़े शरीफ आदमी। तो उन्होंने और मैंने कहा कि ये रेजिडेंट को दारू मिलनी चाहिए और खाना मिलना चाहिए, और बाकी सबने कहा नहीं। तो मैं भी बहुत ही बदमाश था, तो मैंने क्या कहा कि साहब ये डॉक्टर साहब आपके सामने वोट दे रहे हैं, तो आप कमरे से बाहर निकल जाइए, फिर वोट लेते हैं। तो ही डिड लीव द रूम एंड वी वोटेड। तो तब 8-10 लोगों ने कह दिया कि हाँ खाना मिलना चाहिए। वापस आए तो शर्मिंदा हुए। अच्छा, तो मैं जीत तो गया, लेकिन क्यों यार? व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश? लुकिंग एट दैट टाइम आई फेल्ट वेरी कूल, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कूलनेस इन इट, but it is not good. It's very bad behavior. It's very bad behavior. He was in my father's place. I should have been more respectful. And he was not psychotic, and he was not mentally retarded, and he was not demented. If you were saying that, there must have been some reason. So, अपनी अफलातूनी दिखा के मैंने कॉकीनेस से उनको मैंने शर्मिंदा किया. So what am I saying? I'm treating him, Mom, you don't love me. Or Mom, you have to love me more. Or Dad, you have to give me more. And blah, blah, blah. So I'm putting my neurotic bullshit from my childhood onto this man who's my teacher. And who loves me and who has taken care of me. Later on, मैंने उनसे बहुत I apologized to him many, many times. So इस तरह की हरकतें करता था मैं resident बन के. So I was like thinking I was like some cute Amitabh Bachchan or something, you know. So ये सब अच्छी बात नहीं है ये. This is बदतमीजी. This is acting out of a neurotic pathology. So this is called transference. Transference में कोई सींग नहीं निकल आते. ऐसा नहीं है कि कुछ लाल पीला हो जाएगा आदमी. ट्रांसफरेंस में यह है कि आदमी बिहेव कर रहा है आज के आदमी से कल के आदमी की तरह. ये है ट्रांसफरेंस, कि आज के आदमी से कल के आदमी की तरह. अभी क्या हुआ, कोई एक 43 इयर्स की नौकरी में एक बार कुछ लीगल पंगा हो गया. लीगल पंगा हुआ क्योंकि कुछ एक मरीज थी, वो मरीज के पास बहुत पैसा था, उसने अपने बेटे को एक भी पैसा नहीं दिया, मर गई. तो बेटे ने सू किया अस्पताल को और मुझे भी कि आपने उसको मेरे खिलाफ कर दिया. तो वो कोर्ट केस हुआ, तो मैं भी गया. तो जब मैं गया तो अब आप कमाल देखिए, बेटे का लॉयर है, मैंने भी हायर किया लॉयर, बेटे का लॉयर. मैं जैसे ही दाखिल हुआ मेरे दिल को शांति हो गई. क्यों? कि बेटे के लॉयर की शक्ल जो थी वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से मिलती जुलती थी. तो मुझे लगा ये आदमी जो है ये बहुत अच्छा आदमी है. बिल्कुल अच्छा नहीं था वो, लेकिन मुझे पहले एकदम से शांति हो गई 15-20 मिनट. मैंने कहा बहुत, ये मुझे दुखी नहीं करेगा, ये तो बहुत अच्छा आदमी, क्योंकि उसकी शक्ल किसी से मिल रही है.
तो अब उस जो फीलिंग्स मेरे दोस्त के बारे में है, जो लंदन में है दोस्त मेरा, ब्रिटिश दोस्त जूलियन स्टर्न, तो जूलियन स्टर्न की तरह लगता था याद में मुझे। तो मैंने कहा ये तो जूलियन की तरह है, ये तो मुझसे मोहब्बत करता है। वो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था। He was out there to screw me. So ये इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। ये जो है लव एट फर्स्ट साइट, हेट एट फर्स्ट साइट, और थेरेपी में मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको एक ये वकील की एग्जांपल दी, एक मैंने आपको डॉक्टर विग साहब से, जैसे मैंने इल मैनर्ड बिहेवियर दैट आई हैड टुवर्ड्स डॉक्टर विग, व्हिच वाज ए डेस्परेट प्ली फॉर लव as well as a desperate need for somebody to set me straight, and to put some firm limits on me because I was too outrageous. So those were the kinds of feelings that we have which are called transference. अब इस transference में दो चीजें हैं, एक recreation of the past, unconscious, मुझे पता नहीं था, अब बोल रहा हूं ना 76 साल की उम्र में, as a psychoanalyst, looking back I'm saying I was wanting him to be a bountiful mother, I was wanting him to be a tough father and so on. वो तो तब तो पता नहीं था मुझे, तब तो मैं cool था, बिल्कुल cool and बदतमीज. I was both simultaneously, cool and बदतमीज. Don't think that cool cannot go with बदतमीज and बदतमीज cannot go with cool. I was an ill-behaved cool guy, very ill-behaved but cool. So ये जो है उसके मीनिंग मुझे पता नहीं थे. So it's unconscious recreation of early childhood needs and childhood dilemmas and childhood relationships, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस. अब आइए इस पे कि इसके अंदर सर्च भी छुपी होती है. सर्च भी छुपी होती है कि कोई आदमी यार मुझे बड़ा होने में मदद करे, मैच्योर होने में मदद करे. एक एग्जांपल और देखिए. 21-22 साल का एक लड़का मुझे देखने आया. बॉय कम्स टू सी मी, यहां पे अमेरिका में, अमेरिकन लड़का, बाय मस्ट बी 22 years old, 21. दफ्तर में मैंने दरवाजा खोला, आइए बैठा. जैसे ही बैठा तो अपनी हिप पॉकेट से एक कैमल सिगरेट का, अनफिल्टर्ड कैमल सिगरेट का पैकेट निकाल के मेज पे रखा, जो कॉफी टेबल मेरे उसके बीच में है, और एक निहायत गंदा डर्टी सिगरेट लाइटर भी रखा मेज पे. तो मैंने नोट किया ये क्यों. चुप रहा मैं. फिर मैंने कहा अच्छा तो बताइए क्यों आए. कि डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स. क्या डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम? कि वो जो मेरे टीचर्स हैं वो बहुत नाराज होते हैं कि मैं बोलता बहुत हूँ क्लास में. अच्छा, ये पहले भी हुआ है कभी? हाँ, हाई स्कूल में, कॉलेज में. तो अब ये पता चला. तो मैंने कहा अपने फादर से क्या रिलेशनशिप है आपका? तो झगड़े. तो मैंने कहा फिर ये देखो, ये जो अभी तुमने यहाँ पे सिगरेट रखी है, इसका क्या मतलब है? कहता मैं बैठ रहा था तो मैं नहीं चाहता था क्रश हो जाए मेरी जेब में. मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन ये मेडिकल स्कूल है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम मुझे देखने आए हो और मेरे सामने कैमल सिगरेट अनफिल्टर्ड रख रहे हो, ये गंदा सा लाइटर. तो डोंट यू थिंक अगर मैं डॉक्टर ना होता, वो साइकियाट्रिस्ट, साइकोएनालिस्ट ना होता, तो आई वुड हैव बीन पिस्ड ऑफ. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. अगेन एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए ट्रांसफरेंस का. कि मरीज देखने आया तो वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है, नेक आदमी है. तो मैंने उससे कहा कि आइए अंदर. तो वो हाथ में ऐसे रोल किया हुआ टाइम मैगजीन अपने साथ अंदर ले आया. तो टाइम मैगजीन नहीं मेरे वेटिंग रूम में, तो ये तो इसका अपना ही है, लेके आया. तो अब सोचना पड़ेगा ये क्यों, टाइम मैगजीन क्यों लेके आया अपने साथ? What is he trying to tell me? Who is he trying to make me into? तो मैं चुप रहा. मैंने पहले, अभी तो डेटा कलेक्ट करना है ना, तो मैंने बताइए किस लिए आए. तो कहता है कि ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से, ब्रेकअप हो गया, बड़ा परेशान हूँ. क्यों ब्रेकअप क्यों हुआ? कि वो मैं इतना प्यार करता था उस लड़की से, लेकिन वो जो है वो मुझसे नाराज रहती थी. क्यों नाराज रहती थी? कि तुम जो सारे फैसले खुद ही कर लेते हो. तो मैंने कहा जैसे? तो कहती है इस पे सबसे बड़ा ये हुआ कि उसकी बर्थडे थी. अब मैं रहता हूँ फिलाडेल्फिया में. फिलाडेल्फिया 110 मील दूर है न्यूयॉर्क के सेंटर से, मैनहट्टन. तो कहने लगा कि उसकी बर्थडे थी, तो मैंने 2 टिकट खरीदे ब्रॉडवे के प्ले के,
और अगर शॉर्ट नोटिस पे खरीदें तो 200-300 रुपए का एक टिकट आता है, डॉलर का। तो उसने 2 टिकट खरीदे और ट्रेन का टिकट खरीदा और कहता मैंने जाके उसे कहा कि परसों तुम्हारी बर्थडे है एंड लेट अस गो टू न्यूयॉर्क एंड वी विल सी दिस प्ले। एंड शी गॉट वेरी अपसेट एंड शी सेड दिस इज exactly what you do all the time. I don't want to go to New York. And I don't want to sit in a train for an hour and a half and then 2 hours or 2.5 hours in a theater. That's not my idea of celebrating my birthday. इस पे झगड़ा हो गया और इस पे ब्रेकअप हो गया, लेकिन ब्रेकअप बन रहा था इसी तरह से। तो लड़की ये कहती है कि सारे फैसले तुम खुद ही कर लेते हो बड़े बड़े, तो रिश्ता क्या है? अच्छा, अब मैं सोच रहा हूं ये टाइम मैगजीन क्यों लेके आया। तो फिर मैंने इससे पूछा कि कभी ऐसा और भी हुआ किसी लड़की के साथ, तो वहां भी ऐसे ही कुछ था। फिर मैंने कहा बचपन की बात बताइए। तो दोनों माँ बाप डॉक्टर थे और तलाक हो गई माँ बाप की, और ही वाज 6 years old जब तलाक हुई। तो 3 भाई थे, ये सबसे छोटा था। तो ही बिकेम ए वेरी गुड बॉय, क्योंकि इसको था कि माँ डॉक्टर है, काम करती है, अब डिवोर्स भी हो गई है, शी इज मैनेजिंग 3 boys, तो मैं अच्छा लड़का बन जाऊं और सारे काम खुद ही कर लूं ताकि माँ को ज्यादा बर्डन न करूं। तो दैट टर्न्ड हिम इनटू ए काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। जब ये बात इसने कही तो मैंने कहा अच्छा, अब इन बातें तो कर ली, अब ये बताइए टाइम मैगजीन क्यों लेके आए थे आप? तो कहने लगे मैंने सोचा कि अगर आप लेट होंगे तो मैं वेटिंग रूम में बैठ के टाइम मैगजीन पढ़ूंगा। तो मैंने कहा ये क्यों सोचा आपने कि मैं लेट होऊंगा, पहली बात। और दूसरे ये क्यों सोचा कि मेरे जो है वेटिंग रूम में कोई मैगजीन ही नहीं होगा। तो मैंने कहा ये देखिए, ये वही चक्कर आप कर रहे हैं जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया आपने, वही मेरे साथ कर रहे हैं और वही अपनी माँ के साथ आपने किया। क्या है कि अगर मैं आपको खाने पे बुलाऊं, मैंने उसको बोला, I told him, okay, suppose I invite you for dinner at my house and you come with a box with a hamburger in your hand. How will I feel? That's what your girlfriend was feeling. So this is called transference. Transference का मतलब क्या है कि पुराना रिश्ता जो दिल में है, जो सीमिंगली डेड हो चुका है, लेकिन वो डेड नहीं है, वो अलाइव है, और वो इफेक्ट कर रहा है आज के रिश्ते पे। तो इस पे एक देखिए मेरा ही एक शेर है बहुत अच्छा, मेरा एक शेर है इस पे, माँ बाप भाई बहन तो कहने की चीज है, माँ बाप भाई बहन तो कहने की चीज है, परछाइयों का अपना अलग खानदान है, परछाइयों का अपना अलग खानदान है। You know, mother, father, brother, sister, these are labels. It's the shadows that exist in our heart and that fall on other relationships. That is the family in which we live. माँ बाप भाई बहन तो कहने की चीज है, परछाइयों का अपना अलग खानदान है. So now this is the situation. So this is called transference. अब इसमें रेपिटेशन भी है और सर्च भी है. अब आते हैं आखिरी रिलेशनशिप पे. फिर से एक बार दिखा दें वो स्लाइड प्लीज. अब ये चौथी रिलेशनशिप जो भी एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड काउंटर ट्रांसफरेंस. दिस इज बिटवीन द थेरेपिस्ट अनरिजॉल्व पार्ट and the patient's total personality or some aspect of the patient's personality. And this is characterized by unconscious recreation of the therapist's childhood scenarios, as well as his or her excessive responsiveness to or identification with the patient's transference-based perceptions. ध्यान से सोचिए, इसमें थेरेपिस्ट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. होपफुली, उम्मीद तो ये है कि डॉक्टर कम बीमार है मरीज से, सो उम्मीद यह है कि कम प्रॉब्लम्स होंगे और कंटेनेबल होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लीकेज हो जाती है. तो उससे क्या है कि आदमी जो है वो मरीज को ठीक से देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, या मरीज की बात सुनेगा तो उसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेगा, या
उस पे रिस्पॉन्स ज्यादा करेगा, या जो मरीज आपको बना रहा है वो आप बन जाएंगे। अच्छा, अब इसको बंद कर दें तो फिर मैं डायरेक्टली लोगों से बात करता हूँ। थैंक यू फॉर शोइंग दिस। सो नाउ दिस इज ए काउंटर ट्रांसफरेंस सिचुएशन। तो पहले समझते थे कि काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। काउंटर ट्रांसफरेंस तो होगी, कुछ ना कुछ फीलिंग आपकी भी मोबिलाइज होती है। अब इसमें जब फीलिंग मोबिलाइज होगी तो उसमें कुछ तो एम्पैथी की फीलिंग है। एम्पैथी की फीलिंग है कि मरीज बात कर रहा है दुख की, तो आपको भी सैडनेस होगी। कुछ सिंपैथी की फीलिंग है, ठीक है ना। कुछ फीलिंग जो है कि वी फील विद द पेशेंट, वी फील फॉर द पेशेंट एंड वी फील ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। जो बात मरीज अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और सोच नहीं सकता है और फील नहीं कर सकता है, वो हम फील करते हैं। जैसे लड़की है, बात कर रही है, बता रही है कि उसको उसके चाचा ने या मामा ने सेक्सुअली अब्यूज किया, बट शी इज टॉकिंग इन ए रिलेटिवली पीसफुल वे एंड आई एम फीलिंग आउटरेज्ड। सो हुज आउटरेज इज इट? मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था 5 मिनट पहले, अब मेरे दिल में गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा उसी का है, उस लड़की का है जो मेरे दिल में डिपॉजिट किया गया है। कि 3 तरह की फीलिंग होती है मरीज के साथ, with the patient, for the patient, on behalf of the patient. अब on behalf पे आप ज्यादा एक्टिंग आउट कर दें तो दैट इज काउंटर ट्रांसफरेंस। उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस पे एक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक मरीज आई, अब तो अपनी फीलिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए साइकोथेरेपी के सेशन में। कि एक मरीज आई तो she sits on a chair in a way, ऐसे करके उसके पैर, her legs are extended and her leg is coming this close, her foot is coming this close to my foot. जैसा मैंने कभी किसी मरीज को बैठे नहीं देखा ऐसे। She was pretty much lying down on a chair and lying down in a very odd way. तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब इस औरत का पैर मेरे पैर से 2 इंच दूर था तो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अनईजी। अब इस अनईजीनेस ने मुझे एक बात सिखाई कि मेरे ख्याल से दिस गर्ल हैज बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड। तो इसमें 2 काम कर रही है लड़की। अपना पैर इतना करीब मेरे पैर के रखने से ये लड़की मुझे सिखा रही है, शी इज टीचिंग मी हाउ डज इट फील टू बी अनवांटेडली एनक्रोच्ड अपॉन, how frightening, how vulgar, how dirtying and defiling it feels to be approached bodily without one's will on one's body. Then encroachment. She is putting her experience feelings from childhood into me so that I will learn, so that I will be able to understand. एक ये है। दूसरा ये है कि she is testing me. Will I move my foot and touch her foot and try to have some sexual thing and some seduction, or will I be stay and tolerate it and not do anything and help her talk about it? Meaning, will I be the kind of father or uncle that she needed and wanted, or will I be the kind of father or uncle or whoever sexually abused her that she had? So this action causes internal feelings. तो internal feelings को बोलेंगे काउंटर ट्रांसफरेंस। इस काउंटर ट्रांसफरेंस को यहां से दिल से निकाल के दिमाग तक ले जाइए, तो फिर जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उससे आपको मतलब समझ आएगा कि what is the patient trying to do. So अब ये काउंटर ट्रांसफरेंस भी रोजाना के काम में होती है, कभी ड्रामेटिक, कभी अनड्रामेटिक, कभी सटल, कभी ग्रोस, कभी सटल, कभी ग्रोस। इसमें ये भी जी चाहता है कि पेशेंट के साथ सेक्स कर लें, इसमें ये भी जी चाहता है कि पेशेंट को थप्पड़ मार दें, इसमें ये भी जी चाहता है कि पेशेंट मर जाए तो अच्छा है, इसमें ये भी जी चाहता है पेशेंट से शादी कर लें। तरह फैंटेसी तो इंसान को कुछ भी हो सकती है, आपको भी होनी चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए। अपने माइंड से डरेंगी तो फिर साइकियाट्रिस्ट कैसे बनेगी? डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर माइंड, जस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट योर बिहेवियर। उस माइंड में जो फीलिंग आएगी उससे पता चलेगा ये क्या कर रहा है।
एक बताऊं आपको, एक बॉर्डरलाइन पेशेंट, बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्शियस, वेरी सैडिस्टिक, वेरी क्रूअल एंड वेरी मैसोकिस्टिक एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। एक दिन मुझसे बोलती है, आई वाज सीइंग हर 3 times a week, फेस टू फेस, सिटिंग अप ऑन द चेयर। एक दिन मुझसे बोलती है कि मैंने ये तो समझ लिया है कि मैं ठीक नहीं होंगी और मैं बहुत बीमार हूं, मैं जानती हूं, लेकिन मैंने सोचा है बहुत, तो एक ही तरीका है इसका कि मैं थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हूँ, और वो ये कि मैं आपके साथ रहूं, एंड आई शुड लिव विद यू, एंड आई शुड लिव विद यू 24/7, पूरा दिन, पूरी रात और 7 दिन। तो 2-1 साल में मेरे ख्याल से मैं काफी ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया, यू नो, what you're saying makes enormous sense to me, because about 3 or 4 days ago I had a fantasy of adopting you and bringing you to my house and giving you a bedroom, and I even had a thought one day of putting some milk and some cookies, biscuits as you call in India, on a tray and bringing the tray upstairs. I could see myself going on upstairs on the steps with milk and cookies. What this tells us, what you have just said and what I have revealed, what this tells you and me both, that we are on the same page, that there is a deep wish in you to be a baby again, and to find a loving and kind mother, and to start life all over again. And I can imagine why you would have this wish. Now, please notice, I'm not doing anything. And I'm not psychotic that I'll think that if I bring her to my house, she'll become all right. Of course she won't. In fact, she may become worse. Because मैं बीवी से बात करूंगा तो फिर वो चिढ़ेगी, मैं बच्चों से बात करूंगा तो चिढ़ेगी, मैं मरीज देखूंगा तो चिढ़ेगी, मैं दूसरी मरीज कहेगी मुझे भी ले चलिए, तो कितने मरीज घर पर रखूंगा। और एक पुरानी मशहूर सेइंग है, वो ये कि इफ यू टेक ए पेशेंट फॉर ए वाइफ देन यू हैव ए पेशेंट फॉर लाइफ। ये भी अच्छी साहू साहब बढ़िया सेइंग है ये। If you take a patient for a wife, then you have a patient for life. So, उसी तरह से ये इसमें reality नहीं है, reality नहीं है, and I'm not going to act on this. लेकिन empathy में से counter transference की जो fantasy है, उससे understanding पैदा होती है कि क्या चीज ढूंढ रही है औरत। और इंसान एक अजीबोगरीब चीज है, इंसान की बात आप समझ जाएं, उससे ही आराम आ जाता है आदमी को। साहू साहब, मैं आपको एक इतना अच्छा शेर सुनाता हूं जो आपने सुना नहीं होगा, इतना बढ़िया शेर, और अगर शायरी से आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है तो लिख लें आप इसको, इतना बढ़िया शेर है कि अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, मुझे किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। क्या बात है, नहीं? अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, मुझे किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। Understanding is not the things that matter, is not the physical action that matter. If a person feels really understood, that helps so much. तलाक वलाक होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, in the end sentence क्या होता है? You don't know me, you don't understand me, you don't even know me. We want to be known. By known, I don't mean famous. We want to be understood by somebody. अगर 3 दोस्त भी हैं आपके, 2-3 जो आपको समझते हैं, उतना काफी है बहुत। This is a very important thing. So when I told her that I have had the fantasy of adopting you and giving you a room in my house and bringing you milk and everything, that shows that you or I are actually understanding each other. That you want to be a baby again and be raised again. अब ये पॉसिबल नहीं है कोई, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आप देखिए, बचपन में प्यार नहीं मिलता है तो इट डज नॉट लीव ए होल कि जिसके अंदर आपने प्यार डाल दिया वो भर गया, ऐसा नहीं कुछ होता। उसके अंदर कॉलीफ्लावर पैदा होता है, कॉलीफ्लावर इन एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग व्हाट लव इज, आइडियलाइजेशन कि लव तो ऐसा होना चाहिए, shame at not being loved, rage and hate at not being loved, revenge fantasies, guilt, इतना बड़ा कॉलीफ्लावर वहां बैठा हुआ है, उसमें आप लव पोर करेंगे वो जाएगा ही नहीं। It's a weirdest thing. Loved people can be loved, unloved people cannot be loved. It's the weirdest
problem. So we have to deal with this cauliflower first. साहू साहब ये शेर है बढ़िया है नहीं? अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, मुझे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे, है नहीं? Excellent, लाख रुपए मेरा नहीं है, उस्तादों का शेर है, पुराना शेर है, 100 साल 200 साल। अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, मुझे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे। सो ये सब है खेल। अच्छा, अब मैंने अपनी बेगम साहब से वादा किया हुआ है कि उनको मैं ये कंप्यूटर वापस कर दूंगा, क्योंकि उनको कुछ काम करना है। तो उन्होंने बोला 10:55 पे मेरे हाथ में होना चाहिए। अब 10:43 हो गया, तो लेट अस टॉक, 11 मिनट बात करते हैं। तो आस्क मी क्वेश्चंस। मैंने काफी बातें कही हैं, तो इट वुड हैव रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क। एक डॉक्टर बासु, एक आइडिया और अभी आया है, स्पॉन्टेनियस, शेयर कर लेता हूं आपसे, इस पे जरूरी नहीं एक्शन करना। मुझे एक आइडिया आया कि अगला सेशन है लिसनिंग पे, उसके बाद अगला सेशन है टॉकिंग पे, इंटरवेंशंस पे, तो ये 10 सेशन तो हो गए। मेरे ख्याल से अगर आप बुरा न माने, अगर आप सोचें कि ये बात में वजन है, वी डोंट हैव टू डिसाइड इट राइट नाउ, एक सेशन और रख लेते हैं एंड में, जिसमें कि कोई स्ट्रक्चर ना हो, जिसमें सिर्फ सवाल जवाब। सोचिए आप, अगर इफ इट फील्स लाइक दैट। मैं एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टर। एक्चुअली मैं शुरू से ये सोच रहा था कि एक फाइनल सेशन अगर हो सके होना चाहिए जो अनस्ट्रक्चर्ड हो, और जिसमें लोग थोड़ा सा खुल्लम खुल्ले बातचीत कर सके, आराम से, कुछ भी हो, because it has been a short but a very intensive journey। अभी तो 2 दिन बाकी हैं। मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा 29 तारीख को। थोड़ा सा टाइमिंग का है कि टाइमिंग वैसे हमने आपस में बात कर लिया, तो अगर ये 8 हमारे लिए 8 बजे वाला टाइम ठीक ही लग रहा है, 8 से 9:30 तक, यानी कि आपका टाइमिंग जो है वो सही रहेगा। आफ्टर द डे लाइट सेविंग टाइमिंग दैट विल रिमेन एज योर 9:30 AM, तो वो ठीक है ना आपके लिए? अगर आपके लिए आधे घंटे पहले ठीक है तो मुझे कोई इतराज नहीं है उस पर। अगर आप चाहते हैं अगर मैं इफ यू वांट मी टू स्टार्ट एट 9 आई कैन डू दैट। तो आप मुझे हम देख लेंगे आपस में। जी वो हम देख लेंगे। हाँ, वो बता देंगे। और मेरे ख्याल से एक लास्ट मेरे हिसाब से भी वो बहुत बढ़िया रहेगा एक्चुअली, अगर हम एक लास्ट पॉइंट, हाँ, that will be wonderful actually, a kind of a free for all session and ओके। अभी है हमारे पास कोई 8-9 मिनट, तो अभी कोई हाँ Yes, Navdeep, carry on. हाँ, तो नहीं, 8-9 मिनट लोग सवाल पूछें तो मैं जवाब दूं। Yes, sir, I want to ask you. It is said that before you start psychoanalysis for a patient, you should undergo psychoanalysis yourself. So is it to resolve your own conflicts that we have to undergo psychoanalysis? And is it possible to resolve all the conflicts in a person? This second is easy question. Thank you for asking an easy question. The answer is no, of course not. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होता है अनबॉर्न लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हैं, और जो डेड हैं वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हैं। मेरे ख्याल से अनबॉर्न एंड द डेड आर कॉन्फ्लिक्ट फ्री। लाइफ में तो हमेशा एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, तो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा, एक्स्ट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। सो दैट इज, इट्स नॉट पॉसिबल टू बिकम कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट फ्री एट ऑल। वो तो फैंटेसी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जरूर हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए और आदमी को ज्यादा अवेयरनेस हो जाए। जैसे ना कि अब डायबिटीज है, तो यू कैन हैव डायबिटीज एंड नॉट बी अवेयर, एंड आप खाते जाइए गुलाब जामुन। दूसरा ये कि आपको डायबिटीज है, आपको पता है कि मुझे डायबिटीज है, तो आप थोड़े होशियार रहते हैं कि यार ये चीज मुझे कम खानी चाहिए, ये चीज मुझे कम करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो psychoanalysis is required to become a psychoanalyst, so that you will be relatively more in contact with diverse intrapsychic state of yourselves, and be more aware of what you are vulnerable to seeing and what you are vulnerable to not seeing and denying, and in yourself and therefore in others. So once one is a little bit more cognizant
जैसे आप ये सोचिए ना कि अगर आप कार से आप 12 सेक्टर में रहते हैं और आप 16 सेक्टर जा रहे हैं, 17 सेक्टर, वो जहां भी था पिकाडिली रेस्टोरेंट और ये सिनेमा हॉल जो फैंसी जगह थी, तो 17 राइट। तो अगर आप कार से जा रहे हैं, अगर आपको कार के बारे में नहीं पता है, कार कैसे चलती है, वो कार में क्या प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ड्राइव करके जा रहे हैं चेन्नई, तब तो कार का पता होना चाहिए ना कि कार में कैसे क्या होता है, ताकि टूट जाए रास्ते में तो क्या करेंगे। उसी तरह जिंदगी है कि अगर आपकी उम्र 80 साल हो गई है, 78 साल, तो आप 10-12 साल और जीने वाले हैं। व्हाट द हेल, मेजर डिसीजंस यू हैव ऑलरेडी मेड। अब आप जवान आदमी हैं और साइकोथेरेपी करना चाहते हैं, तो बेहतर अपना इलाज कराएं ताकि इन्फॉर्म्ड हूं अपने बारे में, क्योंकि सफर तो लंबा है आपका। Yeah, and there is a question by Dr. Namrata, sir, how to deal with the countertransference? Should therapy be continued? Well, yes, of course. Countertransference is inevitable in every treatment. The main thing to do is to be aware of it. Like I was aware that I wanted to adopt this woman. I was aware that there were other times that I wanted her dead, of course, because she was so burdensome. I was aware when this woman was putting her foot next to me that I was extremely anxious. So all these feelings will inform us. गाने आते हैं मन में मेरे पुरानी फिल्मों के, मैं मरीज देख रहा हूं और मन में गाना आ गया कि जूही की कली मेरी लाडली, फिल्म दिल एक मंदिर का गाना। तो 3 दिन बाद वही मरीज कुछ बात कर रही है, फिल्म मेरे सनम का गाना आ गया मन में कि हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का। तो मन में जो गाना आएगा तो उस गाने से पता चलेगा कि ये क्या कह रही, क्योंकि गाना क्यों आया ये मन में, ठीक है ना। तो माइंड को अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो वो उसके बारे में अगले सेशन में बात और ज्यादा होगी, सब्जेक्टिव लिसनिंग पे। 4 तरह की लिसनिंग है, उसमें एक है अपने आप को लिसन करना मरीज जब बोल रहा है तो। और बताइए। So, sir, do we need to tell the patient that we are developing countertransference, or No. this is only for our analysis, our own analysis to Yes. understand? Yeah, to use that as an attempt at understanding the patient. Let's suppose I'm your patient and I come late, I don't pay your bill. We agreed that I'll pay you every month and I delay it. I come with mud on my shoes and spoil your beautiful carpet. And I keep doing this kind of bullshit, right? So one day you may say to me that, Dr. Akhtar, you're trying, I think there are many, many ways that you're trying to piss me off and make me angry. And I'm wondering, why would that be? What would you get from making me angry? The fact is you have become angry. But rather than becoming angry, you will use that anger as a source of understanding the patient as to why he's trying to provoke you to be angry. और पूछिए। तकल्लुफ मत कीजिए, don't be shy. I'm available to you, and as you can see, I'm thick-skinned, so इतना कोई sensitive आदमी नहीं हूँ। एक सवाल का वक्त और है। सर, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस थेरेपी के लिए अच्छा होता है, ये सही है या गलत है? पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, हाँ, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में लेवल देखना है कि अगर ऑर्डिनरी सिविलाइज्ड लेवल है, मैं आपका मरीज हूं, मैं आपसे कहता हूं, क्या आपका लास्ट नेम क्या है, माफ कीजिएगा? शुभम तिवारी। Tiwari. Suppose I say, Dr. Tiwari, I like you very much. You are very helpful to me, and I really feel much gratitude to you, and you are a very good man. It looks like you're a very, very good man. अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको सवाल करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं कमरे में दाखिल हूं, मैं कहूं, हे भगवान, कितने हसीन हैं आप,
इतनी आपकी शक्ल तो इतनी अच्छी है, मेरा दिल धड़क जाता है, ये जरा ज्यादा हो गया, अनलेस कि आप समझें कि आप हैं इतने हसीन, तो वो तो अलग बात है। लेकिन ये कि जब एग्जैजरेटेड हो कि दुनिया में आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, नाउ द पर्सन इज doing something, so that minor positive transference is actually good and should be left unquestioned. But it becomes grotesque, then it has to be questioned. I wonder why you think I'm so good. What makes you say that? It seems to me that there is some advantage you get out of praising me, and I wonder what that is, and so on and so forth. Yeah. Dr. Rahul asked, do we need to document counter-transference in sessions as we usually document about transference? You mean in chart? In the chart? Yeah, in the patient files or in the sessions. Patient files, the psychotherapy notes. Better not to. इसमें विराग गोरखपुरी का मेरे ख्याल से एक मिसरा है कि समझ हर एक राज को फिर भी फरेब खाएगा. Understand everything, but let yourself be deceived. Same thing is about charts. Charts में हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है. काय को आप लिखें कि I wish this patient should die. तो 3 महीने बाद मरीज ने आपको सू किया, कोर्ट में गया चार्ट, वो कहते हैं डॉक्टर विशिंग पेशेंट डेड, ये क्या है? और डॉक्टर विशिंग टू पेशेंट अडॉप्ट द पेशेंट, मैरी द पेशेंट. नहीं, वो सब हमारे प्राइवेट थॉट है, उसका लिखने की जरूरत. अब जैसे कोई सर्जन हो कि उसने एब्डोमेन खोला, पैंक्रियास देखी, कहता है यार बड़ी सुंदर लग रही, हरी हरी, इसकी एक तस्वीर खींचता हूँ, इसकी साड़ी बनवाऊंगा बीवी के लिए. ये तो सर्जन का काम नहीं है ना. आप यू आर नॉट देयर टू टेक. इंग्लैंड में ये डॉक्टर बासु, इंग्लैंड में हुआ अभी 2 साल पहले, एक पेशेंट. ये सर टू मच हो गया, ये आपने नहीं कि इसमें अमजद साहब के कुर्ते मेरे माइंड में थे, खान के कुर्ते मुझे ध्यान में, जो उनकी बीवी बनवाती हैं, शुभा लक्ष्मी. लेकिन कि अभी एक मरीज पाया गया है जिसके लिवर पे सिग्नेचर किया डॉक्टर ने, फिर उन्होंने और मरीजों को ढूंढा, तो उसने 7 पेशेंट के हेपेटिक सर्जन लंदन में, तो उसको बैन किया गया है कि ही वुड साइन हिज नेम ऑन द लिवर विद कॉटरी. ये सब तो पागलपन है ना. अच्छा, आई मस्ट गो, सो वी विल मीट. तो मुझे आप बताएंगे कि अगले हफ्ते 9 बजे करना है या 9:30? You will let me know. We'll tell you, sir. We'll let you know. Swapnajit will let you know within 3-4 days. ठीक है? Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wonderful. Thank you. Bye. Bye-bye.